बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड यू होप सेफ एंड साउंड. Okay, so first of all, I would like to thanks to all of you. A lot of thanks for liking and sharing my video, which I made specially for you, and hope the same that you will always give me your affection, your love in the form of the sharing and liking the videos in future also, because you are the my strength, right? क्योंकि आप लोग जब तक और जितने अधिक तरीके से और अच्छे तरीके से और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ही स्प्रेड करेंगे, जितना ही वायरल करेंगे, इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, because we have made a lot of efforts just only because of your love, your affection, your liking, your sharing, right? So don't forget to like and share the videos, and don't forget to subscribe my channel Vivek Bharti on YouTube and also on WhatsApp and Telegram. Correct. So this video is especially for the class 9th student CBSE board. The topic which I am running the motion, and as I promised, the next video I will prepare especially for you. That is for speed and velocity, and then we'll have distance and displacement first, then we have about the speed and velocity, then we have about the acceleration, then we have equation of motion. One by one I will prepare the videos so that your each topic becomes transparent, clear for you. Okay, so here today I am going to share with you about the distance and displacement, right? In the continuation of the chapter motion, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टुडे इज आवर टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड displacement. ये वो दो शब्द हैं जो फिजिक्स में बहुत ही अधिक यूज होते हैं, और बहुत से बच्चे जो है इसके बारे में ट्रांसपेरेंट क्लियर है, लेकिन बहुत से बच्चों को इसके बारे में डिफरेंस के बारे में, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और कहाँ कहाँ हम लोग उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं है. बहुत से बच्चों को है, बहुतों को नहीं है. तो आज का ये स्पेशल वीडियो इसी के लिए है, सो दैट वी कैन अंडरस्टूड क्लियरली दैट व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बहुत आसान, बहुत सिंपल से शब्दों में अगर हम लोग समझें तो हम लोग कह सकते हैं द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, राइट? बिकॉज वी नो दैट व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट मूव्स, राइट, and it follow a path. Naturally it follow a path, either straight line path or circular path or curvilinear path. Any kind of path must be followed by the body, right? So actual length of path is known as distance, राइट? जिस रास्ते पर, जिस पाथ पे वो चल रहा है, उसकी लंबाई कितनी है, उसने कितनी दूरी कवर की है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, दिस इज सिंपली नोन एज डिस्टेंस. दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. सो डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ. वेरी क्लियर, वेरी इजी, राइट? And it's because it's a distance, it's a length, so its SI unit is meter, correct? SI unit is meter and represented by M, as we all know that meter is represented by M. Now, is it vector or scalar quantity? भाई हमारी जो distance है वो vector quantity है या scalar quantity? बहुत से आप सब लोग जानते हैं, बिल्कुल सही आप लोग जानते हैं, that distance is a scalar quantity. Scalar quantities are those quantity which can be represented by giving magnitude only, right? Such quantities
which can represent by their magnitude only are known as scalar quantity such as distance, time, mass. ये सब वो क्वांटिटी हैं जिनमें आपको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे टाइम, 1 आवर, 2 मिनट, 1 सेकेंड, 365 डेज, ये सब क्या है, टाइम की यूनिट है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इस समय 2 PM हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, 3 PM डाउनवर्ड, राइट, 4 PM टुवर्ड्स लेफ्ट, देयर इज नो नीड टू गिव डायरेक्शन, right? Such quantities are known as scalar quantity. So in the similar way, distance is also a scalar quantity, right? Distance क्या होती है, scalar quantity होती है। इसमें डायरेक्शन देने की आपको जरूरत नहीं है। It needs only magnitude, no need to give direction. Correct? So this is about the simple concept about distance, right? Actual length of path. बॉडी जिस रास्ते पर चल रही है, जिस पाथ पर चल रही है, उसकी लंबाई, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या है भाई, मीटर, राइट? इज इट स्केलर वेक्टर? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, याद रखना है, कैन नेवर बी जीरो, करेक्ट? So if an object is moving, the distance can never be zero. अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब पॉइंट आपके काम आएंगे, राइट? सो दिस इज अबाउट द डिस्टेंस। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, इट्स SI यूनिट इज मीटर, राइट? And it is a scalar quantity and it cannot be zero. Now come to the displacement, second one. Displacement. What is this? Displacement क्या होता है? Difference है between distance and displacement. क्या है? The shortest length of path between initial and final position of a body. Keep in mind, the shortest length of path between initial and final position of a body known as displacement. Shortest length of path between initial and final position of a body. So, shortest length of path between initial and final पोजीशन। कीप इन माइंड, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं इसी में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट्स SI यूनिट इज आल्सो मीटर। SI unit is meter, represented by M, and it is a vector quantity. It is a vector quantity. याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। कैन बी डिस्प्लेसमेंट जीरो? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिपेंड करेगा कंडीशन पर, राइट? बात करेंगे अभी, इसको समझ में आएगा आपको कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, राइट, बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो याद रखना है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ओके, so this is about the distance and displacement. So if I say that write down any 4 differences between distance and displacement, बहुत आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि distance और displacement में क्या differences है, करेक्ट? एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसकी हेल्प से हम लोग और समझेंगे बेटर तरीके से कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, राइट? उस प्रॉब्लम से आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, करेक्ट? लेट्स स्टार्ट। चलिए एक हम लेते हैं यहाँ पर
square. This is a square of we can say 10 meter. Its every arm is of 10 meter. Its name is, नाम कर देते हैं इसका ABCD, right? So it's a square path. Basically, it's a square path on which a boy is running and start from point A. A boy start from A, running, starting point, right? Starting point is A. Boy is starting from this on to run on this square path, right? And it reaches at point B. भागते 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 जो बॉय है वो पॉइंट बी पे पहुंच गया. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा. आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा क्या होता है, कैसे होता है, राइट? तो एक जो बॉय है वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, भागना शुरू करता है और बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, राइट? तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉय रीचेज एट पॉइंट बी, करेक्ट? वैसे जब बॉय यहाँ से चल के बी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो इसका डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपको निकालना है. चलिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाल रहे हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस को DIS T से रिप्रेजेंट कर दिया है और डिस्प्लेसमेंट को DIS P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, डिस्टेंस को DIS T से रिप्रेजेंट कर दिया हमने और डिस्प्लेसमेंट को लिख रहे हैं शॉर्ट में DIS P, करेक्ट? डिस्टेंस क्या है भाई? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना हुआ? 5 मीटर. एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, सॉरी 10 मीटर. एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना हुआ है? 10 मीटर. लिख लेते हैं 10 मीटर. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं. ये कॉन्सेप्ट याद रखिए. जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, आपको क्या करना है? सिंपली स्टार्टिंग पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है. दिस विल गेट यू विल गेट shortest distance, which is also known as aerial distance, हवा, air में, right? So this is the same AB. How much? 10 meter. This is the first part. Now come to the second part. Listen carefully. Second part. क्या हुआ कि हमको फिर निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब ये बॉय चलते चलते C तक पहुंच गया है. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा A है. हर केस में याद रखिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हर केस में A ही है, राइट? तो जब बॉय चलते चलते A से C तक पहुंच जाता है, देन वी हैव टू फाइंड आउट अगेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? फिर से निकालते हैं. डिस्टेंस इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर, करेक्ट? So this becomes distance, actual length of path. 10 meter this one, 10 meter this one, हो गया. Distance 20 meter. What about the displacement? Shortest distance between initial and final position कैसे निकालेंगे? Initial और final position को आप join कर दीजिए, simply join कर दीजिए. This is the displacement, shortest distance, right? So displacement क्या हो गया भाई? Displacement equal to AC. And this is a square, so we know that this is a right angle triangle. So AC कैसे निकालेंगे? Simply by using Pythagoras theorem, right? So AC equal to under root AB square plus BC square. It becomes 10 square plus 10 square becomes 100 plus 100 under root 200, that is 10 root 2. Got it? 10 root 2 meter. This is displacement. Got it? समझ में आया? Displacement कैसे निकाला यहाँ पर? Shortest distance between initial and final position. चलिए आगे चलते हैं. थर्ड पार्ट करते हैं. When the boy comes at the point D, फिर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है. स्टार्टिंग पॉइंट इज वंस अगेन A, एवरी केस.
बॉय चलते 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 कहाँ आ गया, डी पॉइंट पर। फिर निकालिए भाई, डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी बी सी सी डी, 10 प्लस 10 प्लस 10 is equal to 30 meter. And what is displacement? Distance हो गया 30 meter, actual length of path. Displacement, shortest distance between initial and final position. Initial और final position के बीच में shortest distance, that is AD. और AD कितना है, 10 meter. तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर आ रहा है, कहीं कहीं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहा है। डिपेंड कर रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ फाइनल पोजीशन कैसी है, कितनी है, इस पर डिपेंड करता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ दिस डाउट। फोर्थ पार्ट, व्हेन द बॉय कंप्लीट वन कंप्लीट राउंड, व्हेन द बॉय मेक्स वन कंप्लीट राउंड, then find out distance and displacement, right? चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, दैट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 is equal to 40 meter. This is distance. What is displacement? What is displacement? Starting point A, final point A. What is shortest distance between initial and final position? 0. तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि जब भी कभी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा, करेक्ट। जब भी कभी स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। और ऐसा एग्जाम्पल जहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल और बताते हैं। सपोज कीजिए आपने बॉल उछाली और देन यू कैच इट अगेन, बॉल को आप उछालिए ऊपर और फिर से कैच कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 0, बिकॉज द स्टार्टिंग एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉल इज सेम। सो वंस अगेन हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0, करेक्ट। और कहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है भाई, व्हेन अ बॉय रन्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, then the distance complete in one round 0, 10 राउंड डिस्टेंस, तो आपका इसके पैरामीटर के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। अगर बॉल उछाल के आप हाथ में पकड़ लेते हैं तो भी डिस्प्लेसमेंट 0, और अगर कोई रनर सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट, displacement after 1 round 0, after 10 round 0, after 100 round 0, because after every round the initial and final position will be same, correct? After one round the initial and final position will be same, that's why displacement is 0. So these are the such cases where displacement is always 0 but distance cannot be 0. So many questions are there, so many doubts are there around you in which you can find out distance and displacement by keeping the concept which I share today with you. Concept of distance and displacement, right? What is difference between distance and displacement, right? In this way we can approach other doubts and other questions, keeping in mind कि distance क्या है और displacement क्या है। आई होप आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे, बहुत छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डोंट फॉरगेट शेयर एंड लाइक माय वीडियो, माय चैनल, एंड आपसे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट इट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।